Most respected Vimalanand sir, Namaskar. distinguished Singh sisters, Priyanka Singh, Divya Singh, Padma Shri Prashanti Singh, Pratima Singh, Akansha Singh. So today our podium is so heavy. So made it with all these girls coming in. And all the distinguished guest speakers, Kapri sir, Dr. G. Kishore sir, and all invited guests and my dear friends. On behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports and Hello India, LNCP SAI, a warm welcome to Vimal sir, the Director of Sports. Sir has given us this platform for the PE and community coaching. We all are indebted to you for having given us this platform where the PE community and the coaching community could come up. So on behalf of all those present, a warm welcome to Vimal sir. So Thank you. Thank you. I'd like to welcome Padma Shri Prashanti Singh. I think each one has got so much of added because all are internationals. As I said, when you bring in internationals, Padma Shri Prashanti ma'am, Priyanka Singh, Divya Singh, Pratima Singh, Akansha Singh, each one of you, आप सबको हम आपको वेलकम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। Thank you, ma'am. हमें लग रहा है कोई बॉलीवुड बोलते हैं ना, तो हमारा ग्लैमर बढ़ गया हमारा सेशन में। तो आप सबका स्वागत है। I'd like to welcome Dr. Kishore sir in his absence. I'm sorry, I think sir is here. I'd like to welcome also my co-host. We have Dr. Sanjay Prajapati, Dr. Narendra Gangwar, and Kapri sir, and all the invited guests. Because of this, because we have a very unique event today, we have a number of guests with us, and also all my dear friends. Each and everyone, a warm welcome to you. May I now request Dr. Sanjay Prajapati to kindly introduce our distinguished Singh sisters, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, dear participants, today we have very eminent personality within us, Singh sister. So, आप सभी को मेरा नमस्कार. Good afternoon, everybody. So, आज हम आपके बीच लेके आए हैं सिंह सिस्टर्स को, जिन्होंने भारत में बास्केटबॉल में अपना नाम रोशन किया है। इनकी जर्नी उदय प्रताप इंटर कॉलेज से स्टार्ट होकर भारतीय टीम तक पहुंची है। तो ये आज हमारे बीच आई हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। जो पूरी लाइफ इन्होंने बास्केटबॉल में दिया है, वो एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर करने के लिए आई हैं। सो आई विल जस्ट ब्रीफ अबाउट ऑल सिस्टर्स. सो फर्स्ट वी हैव Priyanka Singh. So she is currently working in MYP Physical Education teacher and head coach of Chadwick Varsity girls basketball team. She has already coached UP team in basketball championship for 2 consecutive years, and she has completed Masters in Education Administration from Sant Teresa International College, Bangkok. She captained in National Sports Festival for Women held in Andhra Pradesh. Next we have Divya Singh. Divya Singh is a former captain of Indian national women basketball team. She has participated in many international events like FIBA Asian Championship for Women, Commonwealth Game, which was held in Melbourne, and many international events. And she has awarded with the captain of Indian basketball team at Commonwealth Game, Bharat Gaurav Award for Excellence in Sports, Rani Lakshmi Bai Bravery Award from the government of Uttar Pradesh. So thank you, Divya ma'am. Now we have Prashanti Singh. Prashanti Singh is a shooting guard for Indian national women basketball team. She has awarded with the Padma Shri Award by Government of India in 2019. She also awarded with the Arjuna Award in 2017. And Rani Lakshmi Bai Award by Uttar Pradesh government. She has participated in many international events. So thank you so much, ma'am. Now we have Akansha Singh. Akansha Singh,
She also belongs to basketball from Varanasi. She awarded with the one of the best 4 A grade player across the country in the women's section. She has participated in many international achievement event like Asian Game 2014, FIBA Basketball Asian Championship, Asian Game 2010 Guangzhou, FIBA Asian Game Championship 2009, 2007, 2006, 4. So very big achievement. Thank you, ma'am. Next we have, I think Prashanti, ma'am have not joined still. I think she's facing some connection issue. So thank you so much, all of you. Now I would like to invite our Singh sister. First, I would like to invite Priyanka Singh, ma'am, to share his experience and view and role of physical education in her life. Please, ma'am. Thank you, Sanjay. My God, where should I start from? This is my 30th year in sports as a player, as a coach, as a physical education teacher. It has been a very, very long journey, but never thought that I'm going to end up here in South Korea as a physical education teacher. I would say, मेरे ख्याल से जब हमने खेलना शुरू किया था 30 साल पहले, हमें पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि हमारे बचपन में हमें कभी बताया ही नहीं गया कि आगे क्या है. तो जो फ्रेंड्स ने किया, जो सबने किया, हमने बस फॉलो किया. But I would definitely like to thank my coaches, Nathan sir and Amarjeet Singh sir, क्योंकि उनके डर की वजह से हम लोग जहाँ मतलब डर बोलो, जैसे जो उन्होंने सिखाया हमें एज अ कोच, क्योंकि हम खेलना शुरू करते हैं शौक से, फिर वो एक हमारी हैबिट बन जाती है. स्पोर्ट्स की ये ब्यूटी है कि एट द एंड स्पोर्ट्स बिकम्स अ लाइफस्टाइल. तो जो डर था पहले कि अगर हम कोर्ट पे लेट पहुंचेंगे तो हमें एक्स्ट्रा राउंड्स मारने पड़ेंगे, वो हमारा फिर बाद में डिसिप्लिन बन गया, जो अभी तक हमारे साथ में है. तो जो भी जर्नी रही है अभी तक की, उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है. जो भी अचीवमेंट है अभी तक का, वो सिर्फ स्पोर्ट्स और हमारे कोचेस और हमारे सराउंडिंग की वजह से है. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो हमारे अंदर से ही जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे अंदर से हमेशा एक प्रश्न आता है कि हम कैसे उस अचीवमेंट के पास पहुंचे, कैसे उस हाई लेवल पे पहुंचे. तो हमारे बीच सिंह सिस्टर्स हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि वो कैसे स्टार्टिंग से कैसे उस अचीवमेंट को प्राप्त किया, कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट किया बास्केटबॉल में. वो सारा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट दिव्या सिंह मैम टू शेयर हर व्यू, प्लीज. Hello. First of all, I would like to thank LNCP, Chuvendram, Dr. Kishore sir, and Sanjay for inviting all of us here. And this is a great opportunity. And this is, I think, first time we all are together and talking about our journey. And thanks to you all for inviting us. And I would add one thing that you forgot to introduce Pratima. And Pratima is also. Thank you. So Pratima is also, she's the youngest one, and it happens, you know, so many actually in the family, so happens. So Pratima is also she was a very, very good basketball player, and she played for so many Indian teams. Like she captained a junior Indian team also. She has done a lot of studies. You know, I don't know how much she has studied, but all the physical education which we can think of, she has done it. And she is a topper of NIS also, and successfully done her work in many colleges in Delhi and Noida. Now she's resting and she's thinking to start something on her own. So this is about Pratima, because you forgot, so I thought I should tell. Thank you. That's more special now. Yeah. So okay, so we talk about the journey. We belong to a very small place, Varanasi. It's very big place in the world's eyes, because it's a small but very spiritual and very different place. And we all love Varanasi, by the way. So Sports Authority of India has played a vital role in making us what we are today. We had a extension center in Varanasi. So when I was playing that time, we had not so many things to do that, and we were so many
kids in the house, and my mom used to feel very, you know, lethargic because we keeps demanding things, and she used to, you know, somehow she used to send us to play somewhere. So Sports Authority of India Extension Center, there Amarjit sir came, and he thought that definitely if boys are doing really well, then girls also can do that well, and you know, because of the genetics and whatever you can say. So we started playing there, and fortunately I was the first player who represented India from Uttar Pradesh, and from Banaras also. So from there, I think, you know, I got the understanding that, you know, we can do something in sports, and we were all very good in studies. And after that, I wanted to study in BHU, so I got into BHU and studied physical education there. And you won't believe what physical education did. Mostly what happens is, like, there are many physical education teachers must be here. We, like maths teacher and other teachers, they have different reputation in the school, and then there comes the physical education, which is totally wrong, because if you see, most of the physical education teachers are favorites of their students. You know, they remember their favorite physical education teacher more than the other teachers. You know, I'm not demeaning anybody, but the impact of physical education teachers are more on the students. So that way I learned a lot of things, and I wanted to be a doctor always, but you know, somehow ended up in the sports. And so I learned anatomy, physiology, all those things, you know, fascinated me so much. And after that, I got a I got you know, understanding that how I can improve my sporting journey, you know, because I was studying that, and I topped also in PHU. Then because I became an international player, and Delhi team, we came to Delhi and joined MTN. There I played for almost 8 years for Indian team, and then I got selected in an honor scholarship to go to University of Delaware in USA to study sports management, and I became a grad assistant coach there also, and I was on top of my career at that time. So things were just moving so fast, and you know, things were happening like something wanted me to learn everything in sports, you know. So I learned physical education, I learned basketball, then something wanted me to study sports management also. So I went there, I got a lot of knowledge, and came back and took up coaching. And I was just 28 years old and playing really good, but I opted for coaching, and I coached under 14, under 16 men, senior team. So for long 8 years, I coached so many you know, age groups, and then I decided that I should use my whatever knowledge I had. I used to help people with you know, all these ideas of how to manage sports, how to, you know, create events, and how to do things perfectly. And I got the professionalism from which I think still lack in India. So this knowledge I used to educate many others. Then I thought I should do something in sports, and today I joined, like 2 years back, I joined Sports Authority of India as a basketball coach, but taking care of NCOEs and STCs. And I have, because we attend Zoom meetings a lot, so Dr. Kishore sir is always there. So that aspect also is helping me, and I am trying a lot to help whatever I can to help overall basketball sports, not only basketball. So this is how my journey is, from, you know, playing to coaching to managing, to now managing the NCOEs and STCs with the great help of my bosses in office and the Sports Authority of India. So this is a great journey for me. So sports is what made me today what I am today. So this is what it is. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your experience that you have shared here. So I think Prashanti ma'am she has not joined. So let me turn to Pratima Singh. First, I'll introduce her. So Pratima Singh No, it's fine. is a member of Indian women basketball team. She has participated in Asian Games 2010, Guangzhou, China, and FIBA Asian Basketball Championship for Senior Women 2009, Chennai, India. 18 FIBA Asian Basketball Championship for Junior Women 2007, Bangkok, Thailand.
second FIBA Asian Basketball Championship for Young Women 2006 Singapore. So thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite you to share your experience view on physical education. Please, ma'am. Hi, Sanjay, and hi, everyone. So, being youngest of the Singh sisters, I didn't have any other option rather than playing basketball. So basically, आपके घर में जब आपको रोल मॉडल्स इतने सारे मिल जाते हैं तो आप कहीं और देखते ही नहीं हो. आपको भी पता है कि आपको इंडिया खेलना है, आपको बास्केटबॉल खेलना है, आपको बास्केटबॉल के लिए इंडिया खेलना है. तो मैं जब ग्रो अप हो रही थी, मैं जब क्लास 8 में थी, 9th में थी, 10th में दिव्या दी एंड प्रशांति ने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया था. दिव्या दी ने सबसे पहले किया था. तो उस टाइम से ही मेरा एम बन गया था मुझे इंडिया खेलना है. एंड कोच अमरजीत सर थे, वो इतने पैशनेट कोच है कि उनसे बस आपको एक बार बोलना है. मैंने उनको बोला कि मेरा ड्रीम है सर इंडिया खेलना है. तो उन्होंने बोला बेटा जरूर खेलोगे इंडिया. और उस दिन से लेकर जब तक इंडिया नहीं खेला तब तक एक ही सपना था कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है. और फिर इस तरह से मेहनत करके अपने सिस्टर्स को देख के कि किस तरह से खेलते हैं और मैंने भी इंडिया रिप्रेजेंट किया. उसके अलावा मैंने पढ़ाई जरूर की फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था. 10th एंड 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो सबको उम्मीद भी थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगी. देन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिली रेलवेज वगैरह में, बट आई वांटेड टू स्टडी मोर. एंड देन मैंने दिल्ली आके ग्रेजुएशन किया, देन बीपीएड, एमपीएड, फिर एमफिल किया, फिर मैंने NIS किया और अभी भी मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ और अभी भी आगे भी पढ़ना चाहती हूँ. सो NIS में मैंने टॉप किया था और दिल्ली में IGI से बीपीएड एमपीएड किया. और उसमें वहाँ पढ़ाई करके ये समझ में आया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न अबाउट फिजिकल एजुकेशन व्हेन यू प्ले ऑल्सो. बिकॉज इतना डिफरेंस आपको मिलता है जब आप खेल रहे हो और आपको नॉलेज भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपके मसल्स में क्या हो रहा है, आपके बोन्स में क्या मूवमेंट हो रही है. आपको अगर ये नॉलेज है, वो आपका स्पोर्ट्स के साथ अगर जुड़ जाता है तो आपका परफॉर्मेंस एनहांस होता है. जब ये पढ़ाई स्टार्ट की, सब कुछ जाना, एंड देन NIS मुझे ज्वाइन किया. NIS में बास्केटबॉल की वास्ट नॉलेज एंड देन स्पोर्ट्स साइंस की इतनी ज्यादा नॉलेज वहां पे दी गई साइंटिस्ट के थ्रू. तो ये फील हुआ कि बहुत कुछ है फिजिकल एजुकेशन में. बिकॉज कहीं भी कुछ भी कहिए पर स्कूलों में, कॉलेजेस में अभी भी स्पोर्ट्स को सेकेंडरी रखते हैं. लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए और हमें एज फिजिकल एजुकेशनिस्ट हम सब जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, ये समझना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत इंपॉर्टेंस दें. बिकॉज बॉडी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. मुझे तो यही लगता है कि बॉडी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. और अगर आपको इतना नॉलेज है तो आपको स्प्रेड करना चाहिए, नॉट ओनली टू फिजिकल एजुकेशनिस्ट, बल्कि आपको घरों में, परिवार में, बच्चों को, सबको बताना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस. एंड इस तरह से मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की. और उसके बाद अभी भी मैं सोच रही हूँ आगे अकेडमी वगैरह करने का और स्पोर्ट्स से जुड़े रहने का. जैसा कि दिव्या दी ने बताया कि मैंने कॉलेज में, स्कूल में जॉब की और उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिला कि आगे क्या कुछ कर सकते हैं. एंड ये है मेरी सारी जर्नी अभी तक की, आपको बता दिया मैंने. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Akansha Singh to share her experience. Please, ma'am. Thank you, Sanjay. Thank you all the panelists here for giving us this opportunity. We are so grateful and happy to share our experience. Start किया बनारस में तो स्टोरी जैसे दिव्या ने बताया, ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं. छोटा शहर है तो आपको या तो पढ़ाई करना है या तो फिर आप ट्यूशन कर रहे हो या तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कुछ डांसिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, म्यूजिक में. इसके अलावा कुछ ऑप्शन था नहीं. सो फॉर अस वी वर लकी दैट हमारे घर के बगल में ही ग्राउंड था. एंड सिंस प्रियंका दीदी वाज द वन हु लेड अस टू दिस पाथ, she used to play in school. and होता क्या था, हम लोग साइड में खड़े होकर अपनी दीदी को चीयर कर दो, प्रियंका दी खेल रही है, देखो मेरी सिस्टर. अपने फ्रेंड्स में आई यूज्ड टू से अबाउट, ओ मेरी दीदी खेल रही है, देख लो कितना अच्छी बास्केट मार रही है, and all that. So I used to be like, in awe with her. Slowly when Divya got into the team and she became the favorite of all the coaches. So that actually sort of gave us this एक अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, अब हमको भी ऐसा कुछ करना है कि जैसे कोचेस इतना इंटरेस्टेड है देखने में दिव्या क्या कर रही है, प्रियंका क्या कर रही है. So I should do something so good that people should know me, school should know me like that. So उनको देख के हम लोगों ने खेलना शुरू किया. And it has been a great journey. So ये स्टार्ट था.
खेलना शुरू किया, मम्मी पापा का सपोर्ट था, काफी सपोर्ट था कि हम लोग अगर अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं कर सकते हैं. But initially it was never a thing like कि basketball is something which we want to take it as a profession. वो तो बस by chance हो गया. खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, तो एक पैशन आप डेवलप होता जाता है कि आप अच्छा खेलते रहते हो तो रिजल्ट आता रहता है, and then you just follow that path कि next big thing क्या है. तो इस तरह से आगे बढ़ते गए. डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन हुआ, देन स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद जब इंडियन टीम में कैंप में नाम आ गया तो इट वाज लाइक समथिंग कि कुछ बिलीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इवन दो दिव्या हैड प्लेड फॉर द इंडियन टीम देन एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन टू रिप्रेजेंट बनारस एंड यूपी टीम. सो हमारे लिए एक था कि ये सपना ही नहीं है, ये सच हो सकता है. सो ये शी बिकेम आवर रोल मॉडल फॉर एवरीबडी in UP, in Banaras, actually across the country. But she actually led us to this path to represent the country. And then seeing her, like I started playing well. If nothing better than that, at least I wanted to end up like them, that playing exactly the way they play. They're so important for the team. Indian team unke bina, it's not going to be the same like that. So this was my dream. Started playing, got into the Indian camp, got selected for under 18 Asian Basketball Championship. उस टाइम तो इट वाज लाइक इससे बड़ा कोई सपना हो ही नहीं सकता है, ऐसा फील होता था. देन स्टार्टेड स्लोली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके गोल्स भी बढ़ते जाते हैं. देन नेक्स्ट गोल वाज टू गेट लॉरेल्स फॉर द कंट्री. अब इंडिया खेलना ही बहुत छोटा ड्रीम है अभी, अब करना है कि हमको इंडिया के लिए अपने मेडल लेके आना. सो दैट्स हाउ वी kept on going and I've had experience of more than a decade for playing for the Indian team. Learned so many things along the way. But एक चीज मैंने जो नहीं छोड़ी साथ में, I didn't stop studying. From Banaras, I went to St. Stephen's College in Delhi University. वहाँ पे, that's a college which is very prestigious, very, few admissions and all that are, people really dream to go into St. Stephen's College. So I went there, started playing. There were times when I was playing for the college team and I was playing for the senior Delhi women's team. So सुबह जाके खेलती थी मैं कॉलेज में एंड शाम में खेलती थी मैं दिल्ली टीम के लिए. सो थिंग्स लाइक दैट वी सॉर्ट ऑफ चैलेंज्ड आवरसेल्फ अलोंग द वे कि कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं. दैट प्लेइंग 2 tournaments in one day and doing absolutely as much as we can. So there were a lot of things on the way which we learned. Sports was the tool where sort of हमारी जो personality enhance कर दिया, हमारे experiences को enhance किया, ऐसा that feels like in a very short life we have seen a lot. That was the thing. Then after St. Stephen's, I pursued my studies again. I did masters in physical education. As Pratima very rightly said, how important it is to know your body while playing. It is so important. Like we rely on strengthening coaches, strength and conditioning coaches. We rely on coaches, to work on ourselves. But as a professional athlete or as an athlete, we should know about our body. We should understand our body from within. Mentally aspect is something which you can always work on. That push yourself, work hard. That you have to be concentrated. But knowing your own body is very important. So I think in a way, physical education enabled me to understand about my body, my movements, how it can be beneficial to improve. My game, during the tournament and the practices and all that. So that was very helpful. I had very good teachers in physical education who actually, gave us a lot of importance. Even though I was playing for Indian team then, they would never ask me to, it was such an easy environment for me in Kurukshetra. I studied in Kurukshetra University. So, it was good. They were very supportive of sport. Like while I was not there in the college for 2 months, 3 months playing for the country, they would celebrate it. They would support it. So that was a good experience. At the same time, I got good education also. And because of this physical education studies, I could rely on myself. Like, wherever I go, I will be able to do something apart from just playing, So after that, I joined many universities and colleges. I did a lot of, I headed a lot of sports departments. I was in HCL University, Shivnada University. Then I was with Times Group. So both the universities, when I was working there, I was heading the sports department. I learned not only to organize the event, to how to facilitate everything, how to run the facility, how to take care of all the sports at once. Like until then, I was expert of basketball, how to play. Then after this experience, I actually got to know how to I can run the whole center. I can run like 10 sports, 20 sports at once, and I can run I can handle the events
so many events happening at the same time. So all these things actually enabled me to, pursue what I always wanted. So it's a very funny thing that in college I used to speak to my friends, and I would tell them that, so we will generally discuss, and then they will ask me that, what is your goal in your life? So I would say always, this was my goal, that once I grow old, or at least when the major thing would be, I will make an indoor basketball court and run my own academy. This was my goal throughout, even when I was young, because the things which we didn't get when we were young, I want to do something I want to give back to the game. I want to give back to the youngsters what I can get. So this was my dream all along. And while studying, while playing for the Indian team for so long, I realized that, this is not something very impossible. I can do it. I just need that kind of a direction. So all these my, work experience, playing experience enabled me to pursue my dream. So last year I started my academy, which is called Akanksha Singh Basketball Academy. It's a specialized academy. I have enrolled with many programs, more than 200 kids enrolled with me. So doing well, a lot of talents coming up. So this was the whole journey from playing to studying to, getting closer to my dream. So the next thing is, what I think from what my dream would be is to generate, to create so many talented athletes who can bring laurels to the country. And at least, something which, I've always dreamt, कि ऐसी कुछ एक सेना तैयार कर दूंगी खिलाड़ियों की कि जब भी ग्राउंड पे आएंगे तो बस उनको सब देखते रहेंगे. So laurels से लेके आना है. So this was my dream all along. So this is what I'm living right now. Thank you. Thank you, Akanksha ma'am. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप सभी की लाइफ में भी आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. तो इससे रिलेटेड एक okay, so Prashanti ma'am have joined. Good afternoon, ma'am. Unmute. Prashanti, unmute करो. Unmute हो गई, unmute. Good afternoon. Unmute हो गई तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी. Exactly. I wanted to say that. And quickly, मेरा नेटवर्क यहाँ पे बड़ा खराब है. So अगर बीच में इंटरप्ट हो जाएगा तो just किसी भी मेरी सिस्टर्स को ले आना. We are all the same. इसलिए सिंह सिस्टर एक साथ ही रहती है. I would like to invite Prashanti ma'am. हाँ. Share your experience, ma'am, in the field of basketball. मैं अभी अपनी सिस्टर्स को सुन रही थी, तो ऑलमोस्ट ये जो जर्नी है सबकी एक जैसी ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सबकी है अलग अलग. तो जो बास्केटबॉल की जर्नी है तो वो स्टार्ट हुई थी ऑफ कोर्स प्रियंका आदि और दिव्या को फॉलो करते हुए, पर ऐसा मेरे लिए स्पेशली नहीं था कि अब मुझे ये फॉलो करना है स्पोर्ट, क्योंकि देखिए बनारस में क्या होता है, और बनारस में क्या हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए कि उनको क्या करना है. तो हमारा अलग नहीं था, इट्स जस्ट काइंड ऑफ सेम. सो पढ़ने में अच्छे होने का एक डिसएडवांटेज ये था कि लोग बहुत सारी उम्मीद थी कि ये कर लो वो कर लो, कोई मतलब कि आपको क्या पसंद है वो बाद में. हाँ, तो फिर ऐसे ही चल रहा था. फिर पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, तो पिताजी की कंडीशन थी कि भाई अच्छा पढ़ोगे तो ही खेलोगे, तो भी कर रहे थे. देन ऐसा हुआ कि एक जब बोर्ड 10th का बोर्ड हो गया और स्कूल 12th का बोर्ड एग्जाम हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ऐसा था कि अब बास्केटबॉल इज ओवर, स्पोर्टिंग करियर, अब पूरी तरह से एकेडमिक्स में ही जाना है. और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, BHU सब जगह लोग बुला रहे थे. और ऐसा था भी कि BHU में मैंने एडमिशन भी ले ही लिया था अपना, और वहाँ पे माइनस मार्किंग थी तो एंट्रेंस टेस्ट मुश्किल था, लेकिन हो गया था एडमिशन, तो ऑलमोस्ट डन था. पर सेम टाइम पे एक गोवा नेशनल में खेलने के लिए गई थी अंडर 19 का. तो वहाँ पे MTIL जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, उसकी टीम बना रहे थे वो लोग एकदम नई. तो वहाँ पे उन्होंने देखा, तो एज अ यंगेस्ट प्लेयर आई वाज सिलेक्टेड कि भाई इस एक चांस मिला. तो मुझे जब ऑफर मिली तो मुझे तो पता भी नहीं था कि खिलाड़ी को ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर द जॉब टू प्ले. इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. तो फिर ये जब घर जाके बताया तो उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि अरे ये अभी बहुत छोटे हैं. इट्स लाइक कि माय एज वाज नॉट कंप्लीट, कि 17 साल की उम्र में ज्वाइनिंग नहीं होती सरकारी नौकरी में. तो फिर कुछ दिन वेट हुआ एंड आई जॉइन MTIL. तो वहां से ये एकदम फ्लिप हो गई जर्नी
जो ये एकेडमिक की थी, पढ़ाई लिखाई, और नहीं कि पढ़ लिख के कुछ बन जाना है, तो अचानक से हो गया अरे खेल कूद के भी कुछ बनना हुआ है, या फिर खेल कूद के भी मेडल और नेशनल्स और ये सब चीजें होती हैं। तो इट्स बिल्कुल डिफरेंट हो गई, दुनिया ही बदल गई बिल्कुल। और इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े प्लेयर जिनका बस नाम सुनते थे, अब उनके साथ बेंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ नेशनल में खेल रहे हैं, उनको उनसे हार रहे हैं, उन्हीं से जीत रहे हैं, उनके साथ इंडिया कैंप कर रहे हैं। तो चीजें एकदम बदल गई और बहुत सारा प्रेशर भी हो गया ऑल ऑफ द सडन, बिकॉज पढ़ाई का प्रेशर लेने की आदत थी, खेलने का प्रेशर, इस लेवल का कॉम्पिटिटिव प्रेशर लेने की बहुत ज्यादा आदत नहीं थी, उसमें ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगा, देन हो गए। और क्योंकि एक ऐसी जगह से भी आए थे जहाँ पे एकेडमिक्स की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा, तो एक माइंड स्टेबिलिटी रहती है और तैयार रहते हैं थ्रू आउट द ईयर चीजों के लिए। धीरे धीरे उसमें ब्लेंड होते चले गए, और जैसे 17 साल तक का टाइम लगा था LKG से लेकर उसमें इंटरमीडिएट पास करने के लिए, 12th, तो सेम ऑनवर्ड 17 इयर्स नॉन स्टॉप प्लेइंग चला। तो इसलिए कि 50-50 लाइफ चली है, 50-50 एकदम जम के पढ़ना, 50-50 जम के खेलना। एंड एज 34 की एज में 17 साल इधर 17 साल इधर, अब पता नहीं आगे है क्या करने वाली। तो ऐसे ही चली। फिर इसी सब में बहुत कुछ हुआ कि फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप खेले और उसमें गोल्ड मेडल। उस समय तो लगा कि अरे हम तो बड़े वर्दी हैं गोल्ड मेडल के। बाद में जब और खेलने लगे और हर बार वही स्टार्ट होता, तो समझ में आया कि व्हाट वी गॉट, बहुत अच्छा स्टार्ट मिलना, बहुत अच्छे सीनियर मिलना, बहुत अच्छी टीम मिलना, बहुत अच्छा एक सिस्टम मिलना, सबसे किस्मत की बात होती है। क्योंकि बहुत आप अच्छे हार्डवर्किंग प्लेयर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा आपका टैलेंट है। इन सब के साथ भी ये सब चीजें पूरी तरह से फ्लरिश हो पाए, आप अपना बेस्ट दे पाए, इसके लिए एक अच्छे सिस्टम की जरूरत होती है, आपको पूरी टीम की जरूरत होती है। वन कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। और ये जैसा हमारा जो स्पोर्ट है वो एक टीम स्पोर्ट है। तो टीम स्पोर्ट में क्या होता है कि एक टीम जब परफॉर्म करती है तो एक प्लेयर अकेले नहीं खेलता, वो टीम खेलती है, कोचेस होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है। और जब ये टीम, ये तो मेडल जीतने तक की बात बता रही हूँ, और जो ये टूर्नामेंट बड़ा हो, ग्रैंड हो, इसके लिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग लगते हैं, तब चीजें होती हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज को करने के लिए। और सिस्टम में आप अपना पार्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आप जब खेल एज अ प्लेयर उतर रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए, पूरी मेहनत से जाइए, टाइम पास करने के लिए मत जाइए ग्राउंड पे। आप जब कोच हैं तो ग्राउंड पे फ्रॉम द डे 1 एवरी सेशन इज इम्पोर्टेंट, एवरी प्लेयर इज इम्पोर्टेंट। वो उसको देखिए, ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट में 10 दिन पहले प्रैक्टिस करा देंगे, आप कुछ स्टार बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क एकदम हर दिन, हर प्लेयर पे हर सेशन इंपॉर्टेंट है। एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ सिस्टम में जो रन करते हैं लोग, बड़ी बड़ी पोस्ट लेके बैठते हैं, नो, उनका ये काम है कि टूर्नामेंट वो उनका गेम इंटैक्ट रहे इस सिस्टम में। वो उस गेम की अब के को बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं, चाहे मीडिया से लेके कमर्शियल अप्रोच, ये सब उनका काम है। कोचेस को पॉइंट आउट करना या फिर प्लेयर्स को पॉइंट आउट करने तक ही सीमित नहीं है काम बहुत बड़े लेवल का है, तो बड़ा काम करने की भी जरूरत है। तो सबका अपना अपना रोल है, और सब लोग जब इकट्ठे आते हैं तभी कुछ गेम ग्रो होती है और सब लोग ग्रो करते हैं। तो ये एक का इंडिविजुअल का नहीं है, तो सब लोग अपना अपना काम करें तो ही बात बनती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इस जर्नी में बहुत अच्छे लोग भी मिले मुझे, बहुत अच्छे। मेरी बहुत अच्छी टीम थी MTNL की, उसके बाद दिल्ली टीम मिली, और जब पहले भी खेलती थी तब मुझे बनारस की टीम मिल गई बहुत अच्छी। मेरा यूपी कॉलेज ग्राउंड बहुत अच्छा है, वहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं। जो वहाँ पे श्री अमरजीत सिंह कोच थे, मेरी सिस्टर बड़ी वाली प्रियंका सिंह भी वहाँ पे खिलाती थी, और फिर दिव्या सीनियर थी वहाँ पे पहले इंडिया खेलने वाली प्लेयर। मेरी छोटी सिस्टर आकांक्षा प्रतिमा, दोनों बहुत ही पैशनेट प्लेयर है। मेरा भाई विक्रांत है, वो फुटबॉल प्लेयर है। मेरे जो फैमिली में और लोग आए वो भी क्रिकेटर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल के क्वालिफाइड कोचेस हैं। तो एक पूरी टीम बनती की चली गई, एटमॉस्फेयर बन गया। तो बिगिनिंग में अच्छा मिला, और उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो फिर टीम अच्छी मिली नेशनल्स में खेलने के लिए। और फिर उसके बाद दिल्ली में अच्छा रहा। हरीश शर्मा सर थे उसमें सेक्रेटरी जनरल बास्केटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ग्रो करने के लिए। तो चीजें एक होती है ना सिस्टम में, सब कुछ तो अपना काम ईमानदारी से किया मैंने, तो चीजें ठीक से हुई। तो सब लोग अपना काम ऑनेस्टी से करते चले, एक दूसरे को पॉइंट आउट किए बिना कि ये क्या कर रहा है, भाई अपना देखो, तो चीजें चलती चली आती हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ऐसी जर्नी चली है। थैंक यू प्रशांति मैम। नाउ सम क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स हैव आस्क्ड। जैसा कि मैंने बताया कि हम सभी की लाइफ में हमारे पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, तो आप सभी की लाइफ में भी आपके पेरेंट्स का बहुत रोल है, बिना उनके हम सक्सेस नहीं पा सकते। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट सिचुएशन एंड डिफिकल्टी योर पेरेंट्स हैव फेस्ड व्हेन यू वर प्लेयर, व्हेन यू वर प्लेइंग, दैट टाइम व्हाट
I understood the question. I think Pratima or Priyanka and I can answer. Yeah. I think Priyanka. Yeah, okay. So Priyanka Didi will answer it first, then I will answer, because we were the first one to start it, and we had to take a lot of pressure from society and everything, you know. So we will answer first, then they can add up whatever small thing. So Priyanka Didi can answer this question. Okay, I'll start with, I think we were the luckiest one. Like, you know, in UP, if you have girl after girl after girl after girl, you know how the mentality works, right? So when my mom started having like babies after, like girl babies after one after the other, people start questioning, oh my goodness, it's not that how healthy is the baby. It was like, oh my God, now you have a baby now. So, I mean, girl baby, now it's all about dowry, right? How are you going to pay the dowry? So that was one question my parents faced. But I want to say here, my mom especially, whenever people used to ask her that you have got 5 girls now, how are you going to manage their dowry and their other things? She used to say, they are my babies. Okay, I have to take care of them. You're not going to come and feed them. Okay, so keep your mouth shut. That was like something like, you know, kind of slap on everybody's face. And one thing I definitely want to say here, that for the girls, people buy pink. For the boys, they buy blue. My mom, she never ever told us that you are a girl, you should be sitting like this, you should be walking like this, you should be talking like this. And I think that's the reason why when we walk, people say, why are you walking like boys? There's no difference. My God, you just get a kid. There's no boy, there's no girl. Just give them same education, same upbringing, see what kind of human being they will become. So I really salute my mom for that. And my dad, I call him coconut. From outside, he's so hard and so harsh, but inside he's very soft. So his, like, I think somebody mentioned here that his thing was that you guys have to study, you have to become doctor, engineer, IPS, or like just banker. Become something, get a government job. But for that, there was a condition that if you want to play, you have to give me grades. So what we did, we just gave him grades, and he gave us permission. So I think we were very, very, very lucky to have them as parents. They were, I mean, till today, they're very open-minded. I'll give you a recent example. I'm 43 years old now, and I had a very long hair, and I just cutted my hair, and which is not good. I mean, if I go back to India and if I go to my in-laws, they'll not be very happy. But my dad saw me and he's like, you look so smart today. I'm like, oh my goodness. So that kind of father I have. I mean, you can imagine our parents, they're so open-minded. They're so open-minded. And I wish each individual in India can think like them and act like them. Seriously. Thank you, ma'am. The next question we have for Pratima, ma'am. Yes. How did you manage study and sports together? I think it's very easy. If you play sports, your mind works in a better way. And we know it. We all know it. So, जब भी वैसे मैं अपनी जर्नी बता दूं आपको कि मुझसे मेरी बहनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं 10th में फर्स्ट ग्रेड ला भी पाऊंगी, मतलब फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं उसको, तो फर्स्ट डिवीजन आ भी पाएगा. बाकी सारी सिस्टर्स का था, तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी. दिव्या दी ने मुझे बोला, बस ऐसे ही बोल दिया कि ला तो सकती भी है, कि अगर निशी तुमने अगर फर्स्ट डिवीजन ले आया इसमें 10th में, तो फिर मैं तुम्हें एक स्कूटी दूंगी. एंड सरप्राइजिंगली मैंने टॉप किया 10th में. और उसके बाद मुझे पता चला 10th के बाद कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ. So, उसके बाद दिव्या दी ने मुझे स्कूटी गिफ्ट की. देन इनको लगा हो सकता है फ्लूक रहा, और 10th में फ्लूक लग गया कि टॉप करके कैसे हो सकता है, ऐसा यूपी बोर्ड में इतना टफ बोर्ड होता है, उसमें कैसे हो सकता है. देन मैंने 12th में भी टॉप किया, और परसेंटेज ऐसा आया मेरा कि 4-5 साल का रिकॉर्ड टूटा मेरे स्कूल का. मेरा 74% था, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा माना जाता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खेलते हो और जब आप ज्यादा एक्टिव रहते हो फिजिकली, तो आपका दिमाग ज्यादा काम करता है. और यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारे फिजिकल एजुकेशन में है. सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी सिस्टर्स का एक्सपीरियंस है. और जो बच्चे या जो माँ बाप बच्चों को ये बोलते हैं कि वो तो खेलता है इससे नंबर कम आ रहा है, या बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैं खेल ही सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, एक ही चीज कर सकता हूँ, बहुत बेकार एक्सक्यूजेस है.
बिकॉज आपका दिमाग ज्यादा तेज है, आप बस लथार्जिक हो रहे हो, आप आलसी हो रहे हो, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। क्योंकि जो नॉर्मल लोग 1 घंटे में सीख सकते हैं चीजें, वो हम 5 मिनट्स में लर्न कर सकते हैं वेरी इजिली। एंड दैट्स ट्रू। आई मीन आप किसी से भी पूछोगे, आई एम श्योर संजय आपके साथ भी सेम चीज हुई होगी, मैम आपके साथ और बाकी जितने हमारे गेस्ट थे सबके साथ सेम फीलिंग्स है, सेम अंडरस्टैंडिंग है। और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आई एम श्योर अगर वो प्लेयर है या उन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेला है तो उनको भी सेम एक्सपीरियंस हुआ होगा। नहीं, मैं इसके लिए आई विल आंसर बिकॉज यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। क्या होता है, ये चीज हमें हमारे कोचेस से ही मिलती है। No, not only parents, the coaches also are responsible. Even the physical education is also responsible. Because when I took coaching of under 14, under 16, under 18, I made sure that I tell them that sports and studies both are equally important, and you guys can do it. So we have to give a lot of confidence to these kids, because they are looking up to you, and whatever you do, they imitate you. They the confidence you show. If you keep shouting at them, they become very scared, and if you encourage them, they become very happy. So your personality definitely helps helps them to grow, or be a very different person. So I think whenever a physical educationist is taking class or something, they should always tell them that you can definitely do wonders in studies and sports both. If you are, even the talented players should, they should focus on the talented players. They should definitely study, because what happens is when you stop playing, what happens then? See, I can work very well in any environment because I could study. I did all my college and graduation, everything very well. So I could study. I could work so well in USA also, here also. So I think when after, even you are the biggest player, what happens after that? You become very underconfident. You cannot go and talk to the person directly. Either you are such a big player that people respect you differently, then it's a different thing. But if you're a normal player and you have done good in your sporting career, but when you go and talk to people, that is totally different thing. So I think we should encourage everybody that they should play and study both equally. Thank you, ma'am. Now we'll take question very shortly. So one question for Prashanti, ma'am. As after parents, coach and PE teachers, they are playing a very vital role in our life. So who helped you as a coach, as a PE teacher, and how did you manage your financial things when you were playing? So Prashanti, ma'am, please. देखिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग फिजिकल एजुकेशन के हैं, तो एक चीज तो है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले बच्चों को यही लोग दिखते हैं, सबसे पहले मिलते हैं, और उन बच्चों को पता है ना, पेरेंट्स को पता है कि क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है। तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना कि वो अपना इस चीज को पहले तो एज अ एंटरटेनमेंट और फिर एज अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज, एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में ले। बाद में अगर उसमें पोटेंशियल है तो उसको वो देख करके उसको अपना करियर की तरह से ले पाए। नॉट कि हाँ हम सोचते हैं कि हमारा करियर होना चाहिए तो ही करियर होगा, ऐसे नहीं है। पोटेंशियल भी होनी चाहिए उतना कि हाँ ये बन सकता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि मेरे लाइफ में जो ये है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या कोचेस का क्या रोल है, तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे, लाइक रेस हो रही है और खो खो ऐसे खेलते थे, और जो एक स्कूल में लंगड़ी टांग खेलते थे। तो जो कोचेस थे, जो स्कूल की टीचर्स थे, उनको ये पता था कि जो एक फ्री पीरियड में ये लड़की खेलती है तो नहीं, जो छोटे मोटे गेम भी खेलती है उसकी एजिलिटी अच्छी है। और एक सब्जेक्ट 40 मिनट में कि जो एक फ्री पीरियड होता है कि हाँ स्पोर्ट्स का ऐसे खेलते हैं बच्चे, तो उसमें एक चेक रखना कि हाँ कि किसमें कितना पोटेंशियल है, कि किसको पुश किया जाना चाहिए आगे। तो वो फिर यहाँ पे एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे श्री अमरजीत सिंह, तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये सब हैं बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को पुश। एक होता है कि आपके जॉनर में अगर आपके एरिया में नहीं भी है वो, कि अगर लड़कों का कोच है और लड़कियों को देख रहा है कि हाँ अच्छा है, तो पुल करके ले आना, उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये सब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का ही रोल है। और क्योंकि एक स्कूलों में हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या फिर जो भी पीई टीचर्स होते हैं, उनको ऐसे देखना कि अरे
ये एक साइड की एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये उनके लिए चैलेंजिंग जरूर है कि अपने काम को करना, लेकिन चैलेंजेस के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और मेरी लाइफ में भी रहा है। अगर ये कोर्सेज टाइम पे नहीं मिलते, अगर ऐसे, तो हमें तो खुद ही पता नहीं चलता कि हमारा पोटेंशियल क्या है। तो ये एक अच्छा रोल रहा कि मेरी एक टीचर थी, अनप्रभा टीचर, जबकि वो फिजिक्स की टीचर थी मेरी, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती पुश करती रहती थी, नहीं तुम जाके खेलो, क्योंकि उनको लगता था कि आई वाज गुड स्टूडेंट, पर मैं उससे ज्यादा अच्छी खिलाड़ी बन सकती हूँ। तो वो टीचर्स का रोल था एंड कोचेस का रोल था स्कूल डेज में ही बहुत ज्यादा। और दूसरी बात है फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस देखिए, जब आज भी हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि मेट्रो सिटीज को छोड़ दें तो क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके लिए लोग खर्च करेंगे कि हाँ उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए मैथ्स की ट्यूशन लगा दो, साइंस की ट्यूशन लगा दो, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग का एग्जाम है और पीएमसी का एग्जाम है और मे बी यूपीएससी का, तो इवन पास होने के लिए भी एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए लोग खर्च करते हैं। पर जो फ्री में फैसिलिटी मिलती है किसी साइंस सेंटर में या फिर किसी भी जगह पे, लोग वहां पे भी बच्चों को शाम को जाने में उन लोग को प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जगह एक दूसरी बात ये भी है कि जो फ्री की फैसिलिटी मिल भी गई है, एकेडमीज की तो मैं बात ही नहीं कर रही, जो पेड अच्छे एकेडमीज हैं, जो फ्री फैसिलिटीज हैं, उसमें भी क्योंकि वो शूज लगते हैं, उनका आना जाना होता है, उनकी डाइट पे खर्चा होता है, तो लोग पेरेंट्स को लगता है ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है, जस्ट प्ले, अरे यहीं खेल लो कॉलोनी में, अरे यहीं खेल लो पार्क में, क्या जरूरत है जाने की, यू हैव टू स्पेंड ऑन शूज, उनकी जर्सीज पे, उनकी ट्रैवलिंग पे। तो ये फाइनेंस का प्रॉब्लम तो है। तो ये अर्लियर ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरे पापा अकेले अर्निंग मेंबर थे और मेरी मम्मी एक टीचर काइंड हाउसवाइफ थी, तो 6 बच्चे और सब लोग पढ़ने में अच्छे हैं, खेलने में अच्छे हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर थे। तो वी जस्ट मैनेज्ड, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत लग्जूरियस स्पोर्टिंग इक्विपमेंट हम लोग को मिले अर्ली डेज में, पर ऐसा नहीं था। तो ये जो था वी मैनेज्ड। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, साई की एक डे बोर्डिंग स्कीम होती है, उसमें मैं आई तो थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिलने लगी कि हाँ जो साल में जो जूनियर और यूथ खेलते थे हम लोग, तो उसका मेस का फीस का पैसा आराम से लोग दे लेते थे। तो कि हमने तो वो भी पापा से मांगना पड़ता था कि अरे टीम जा रही है, मेस का पैसा देना है, तो बड़ी शर्म भी आती थी। एंड भाई आप अगर इतने मेरिटोरियस प्लेयर हैं तो फिर क्यों मतलब आपका लगना है। पर द थिंग इज कि इतना स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर नहीं था कि वो लोग भी कहाँ से खर्चा करते। तो ये सब चीजें बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन उस समय पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की, अपनी चीजों को साइड में रख के हम लोग बहुत दिनों तक रेंटेड एकोमोडेशन में रहे। 14 साल हम लोग किराए के घर पे रहे, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत थे पढ़ाई के, खेलने के। तो पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है मेरे, उन्होंने किसी तरह मैनेज किया है। पर अभी गवर्नमेंट की स्कीम आ गई है, खेलो इंडिया स्कॉलरशिप दे रही है अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा शुरुआत है और भी अच्छा होने की जरूरत है। थैंक यू मैम। सो विल टेक 2 more question very shortly. So one question for Divya ma'am. What should be done at community level to promote sports? Yes, please ma'am. मैं बताऊं ये चीज, मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंट्रिगिंग लगता है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे क्या होता है बेसिकली, आपको देखिए सारे फिजिकल एजुकेशन वालों को ये पता होता है कि मोटर स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, व्हाट आर द मोटर स्किल्स, काइनेटिक्स क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब पता होता है। उसके बाद हम अपना दिमाग लगा करके डिफरेंट गेम्स जो है इंटरेस्टिंग गेम्स को वो कर सकते हैं ना। जैसे मैं अभी कोच हूँ, मैं अंडर 14 की जब कोच होती हूँ, तो मेरे कोचिंग का डिफरेंट लेवल होता है, उसमें फन एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो है हर एक कोच को अपनी तरफ से दे शुड डेफिनेटली वर्क विद देयर ब्रेन्स एंड स्टार्ट इनोवेटिंग देयर ओन थिंग्स। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बस एक पेपर मिल जाए और हम उसके ऐसा काम करा दें। वैसे अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वंडरफुल टू सी, लेकिन फिर भी कम्युनिटी लेवल पे जो काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा होती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा उनको ब्रेन यूज करना चाहिए कि कैसे कैसे कौन से इवेंट, कौन से छोटे छोटे गेम्स करें, उस गेम्स में भी कौन कौन से छोटे छोटे से कंपटीशन ला दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रियंका दीदी का देखती हूँ, शी शेयर समटाइम्स वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में काम करती है, शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम लोग भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं किसी चीज में। जैसे शुरुआत में जब इन्होंने ज्वाइन किया था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे मुझे अमेरिका में, मैंने एलिमेंट्री स्कूल में एक जगह गई थी मैं देखने, तो वहाँ का सिस्टम ही डिफरेंट है, हमारे का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। वो दिन भर का सोचते हैं, जैसे पढ़ाई भी प्रोफेसर जाके कुछ बताता है, वैसे ही एक जो कोच है उसको भी अपने दिमाग से बहुत कुछ इनोवेटिव करके उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो है
मैं ना बता के वो खुद से पूछना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, because they know everything, you know. उनको बस ये आइडिया लाना है कि वो they can do it, वो कॉन्फिडेंस लाना है कि they can do it. Can I add something? संजय, एक बात बोलूं मैं यहाँ पे? Sure ma'am, sure. मेरा 16 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडिया में भी देखा है कैसा होता है फिजिकल एजुकेशन का, और मैंने बाहर में देखा है 16 इयर्स के लिए। हर स्कूल में, हर इंटरनेशनल स्कूल में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक होता है एथलेटिक डिपार्टमेंट, ठीक है? Yes. और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे हेड ऑफ, जैसे इंडिया में क्या होता है कि एक पीई टीचर पूरे स्कूल को पी पढ़ाता है, ठीक है? मतलब जो मेरे टाइम में था, अभी बहुत चेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या है, मेरा जो अभी स्कूल है साउथ कोरिया में, ये चैडविक इंटरनेशनल स्कूल, मेरे स्कूल में 12 पीई टीचर हैं 1200 बच्चों पे। उसके अलावा हमारा एथलेटिक डायरेक्टर है, हर डिवीजन का अलग है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल, ठीक है? हमारा कोई टच नहीं है। एथलेटिक डिपार्टमेंट अपना काम करता है, जो कि जो दिव्या बोल रही है कि हाउ टू वर्क ऑन द ग्रॉस रूट, ठीक है? और जो फिजिकल एजुकेशन है, ये एक क्राउड को मैनेज करता है, जो सिर्फ पढ़ाता है, करिकुलम डिलीवर करता है। तो हमारा, जैसे मेरे ख्याल से इंडिया में भी ये मॉडल लाना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, फिजिकल एजुकेशन एक अलग चीज है। फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट होता है प्री के से, ठीक है? नर्सरी से ठीक स्टार्ट होता है। अगर आप वहां से बच्चों को, थोड़ा सा होता है ना, वो शायद उसने बोला था, प्रतिमा ने बोला था कि you should know your body, right? So you should start from nursery, and then as they grow up, you should have a very solid athletic program in your schools. Then you will see there is a like there'll be like a curve, very high curve in sports in every department, because we lack in India. PE teacher matlab kya? I don't know. I mean, in my time, it was a discipline teacher, right? but now what I have seen in my 16 years, PE teacher is very different, very, very different from athletic director, जो कि बहुत confusion है इंडिया में शायद. Thank you, ma'am. Thank you for your view. I think this really matters. So as we have a lot of question in chat box, Q&A box, so I'll take just last question for Akansha, ma'am. So what message you want to give for upcoming players and for PE teachers, what they can do in their life? So for upcoming players, what I would say that even though we had so much struggle during, like, you know, when we were growing up, in terms of, like, you know, we didn't have that proper facilities to play in, like, you know, like right now, if you see, if a professional player needs to be made, you need to have एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ ग्राउंड नहीं हो, इंडोर ग्राउंड हो, ताकि जब बारिश हो आपके प्रैक्टिस स्पेस में ना जाए। इंडोर ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सेंटर होना चाहिए, आपके पास जिम होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए हाइड्रोथेरेपी के लिए, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है रिहैब सेंटर होना चाहिए इन वन प्लेस, राइट? So things like that, which is very important, but still we somehow, without these, you know, facilities, we were able to prove ourselves and represent the country and brought so many dollars for the country, you know. So there is nothing, stop making excuses that you don't have, you know, facilities, stop making excuses that you don't have right coaching. हमारे पास से स्टार्टिंग में जो हमारे कोच मिले, हमारे गुरु मिले थे, वो he was the one who brought us into this path, and we are very thankful about like, you know, we are very thankful to him. But along the way, what we learned from different coaches, from our seniors, जितने भी ग्राउंड पे सीनियर भैया या दीदी खेलते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. Everyday training, everyday discipline gave us that kind of you know, zeal or you know, improvement that we could prove ourselves. So this is my message, that keep at it, keep, you know, discipline in place and keep working hard. जब आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी चीजें प्रूव हो ही जाती हैं. So मेहनत नहीं छोड़ना है आपको. अगर कभी भी डिमोलाइज होते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, इसका ये मतलब नहीं है छोड़ के बैठ जाना है. लगातार लगे रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है. So work hard. This has been my motto of my life. So this is what I'm going to pass it on to the kids, that without the facilities also we can do it. But if you have these facilities, nothing like this, nothing like it, right? So this is what for athletes, keep at it. And for the physical educationists, हमारी responsibility बहुत बड़ी है. जैसे प्रियंका दी ने और दिव्या दी ने बताया, बहुत बड़ा responsibility हमारे सर पे है, that from the beginning, first coach is you. Like, you know, you have to recognize what talent they have. You have to give the feedback. You have to get them into track where, you know, they can follow the path of being a professional, you know. So this is what for physical educationists all across. I know many of them who are very, very passionate. My friend, I just saw a question from Anshul as well.
very passionate physical educationist. These kind of people we need more, and also as a like head of department and all that, we have to recognize these kind of people who want to work hard and push them and enable them with all the facilities, all the authorities that they can pursue what they want to do, right? So this is what my message is for physical educationists. Thank you. I think it's a great interaction between us. So I would like to hand over mic to Dr. Usha ma'am. Please, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful sharing experience. You gave so much of energy to everybody. I think there's an aura of energy and everybody are charged. May I now request Vimal sir to kindly speak a few words? Vimal sir, please. Sir, it's muted. Mute, sir, you have to unmute. It's a matter of great pride to meet all of you, and it's very heartening to know that you have not only excelled in sports, but also you have done so well in education, in academics, and all of you are still pursuing academics, and that's a very encouraging thing for all the budding sports persons, as well as the all those people who are involved in physical education and related areas. For you, it's a special talent that we see in the Five Sisters, and but sometimes it's very difficult, and we are seeing in the sports ministry, we are observing it, and we are very much aware of the problem that a budding sports person faces in the beginning of his career or her career. He or she is not able to devote the sufficient amount of time towards sports as well as education. And we all know that education is equally important for any student, for any individual in the country, because you have to choose a career also. So far, though things are changing and we are trying to bring some change in this area, so far it has been a bit difficult for sports persons to choose sports as a career, or people who are linked to sports or physical education to choose it as a career right at the beginning when they are very young. So we are currently trying to devise, or we are studying whether we can have a separate board of education for the budding sports persons also, so that they can devote sufficient time for practicing, and at the same time they can also get some flexibility in the field of education. So I'm very thankful to Priyanka, Pratima, Divya, Akanksha, and Prashanti that you took a time and you could join our endeavor. This is for all the participants here. Once again, and I make it a point to say it every time when I'm here, to all the participants who have joined here, the people who are involved in physical education, please take advantage of this kind of program. It's once in a, it's a very new beginning on the part of the Ministry of Youth Affairs and Sports. And this is just the first month. The first batch is going on. We have 3 batches running simultaneously, and the next batch will start in July. So I would like to encourage or appeal to more and more people who are involved in physical education to come forward and participate. And you all by now, many of us would be aware that we are getting very excellent panelists and speakers, and not only those who are good in the theory part, but also those who have actually been in the ground, the real sports persons, and those who have excelled in physical education also, not only from India but also from abroad. So it would be very encouraging for us if more participants come in the next month and the coming months. And this is as we all know, as Prashanti said, that we have been
it's more, a physical education teacher has been so far. We also, when we were small, we also used to, treat a physical education teacher as a discipline teacher. So, but now we want to pay the right amount of, emphasis to physical education in our country also, and not only the HRD ministry, which is running the education boards, but also the Ministry of Sports. We are all trying to devise ways to encourage physical sports and community coaching in the country. And as a part of Khelo India scheme, which we are running from the ministry, we have a separate vertical for physical education and community coaching. And this program is a part of that vertical. So we want to carry it forward in a much more structured manner. And I would request the 5 Singh sisters also to be continuously, associated with us, encourage us, and help us in propagating the spirit of sports and physical education in the country. And my thanks to Sai LNCP, who have taken up this great responsibility of starting the program and carrying forward the program in such a encouraging manner. And I hope we are able to get more people to join with us and develop the spirit of community coaching and physical education in the country. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Your support is going to help us a long way in uplifting physical education. And you are actually a mentor, I could say, because you understand physical education, you understand the pulse of the community sport and physical education. I'm sure with your support, we could reach great heights because you're the one who can get our voice reach to the top. So thank you so much, sir. May I now request Dr. G. Kishore, sir, Principal, sir, for his views. Thank you, Dr. Usha. Respected Vimal Saab and co-panelists, and all distinguished 5 Singh sisters, Divya, Shanti, Fatima, Akanksha, and Priyanka. We are really very much indebted to you for your gracious presence. And what I could feel is that whatever we have taught the last 2 weeks, it is the best testimonial and of the whatever theory has been taught. There are a lot of principles, lot of science, lot of applications are all being delivered in the last. But this is become the Saturday. It is something, a testimonial and a living example of whatever the theory which you have taught. It is something which is can be achieved or can be practical. So it is the best testimonial to the community and physical education coaches that if they deliver, the society benefited, how the country would be benefited. And I think there can be no better testimonial than this, which could be revealed to the society who have withstood all challenges and have been took sports as a passion, a family, a community, and have come up to the heights of glory and to the pinnacles. So what else you require? So we are placed on record our sincere appreciation and gratitude to all of you, all the 5 sisters, for your whatever you have spoken are out of, it doesn't have any, these are all basic facts. These are all out of your own life experience. These has all come out from your life, and it is all example for the entire country to follow. So that is what I think we may have one more session if Vimal sir permits with all of you, and we humbly request your parents also to be present in this. And also maybe some of the coaches, community coaches and teachers whom you admire, also we would like to have them also on board, and we'll have a better, more big sessions with participating much more luminaries and state representatives, state governments, and maybe higher levels of functionaries, so that this message is given to the entire country. And they have all points have been spoken, so it is go extempo
it doesn't. It is all based on principles about participation in sports. How it will be beneficial to your career. How it should be taken as a passion, and access to playfield. You have mentioned. I think Akanksha mentioned that you have a playfield nearby, and you started using that playfield. So access to the playfield, how best it is, and the goal to the life. How it become a goal, you've taken it as a target or as a passion. And also, I think it was Prashanti who spoke about games and grades. That parents used to, ask, if you play a game, you have to bring grades. So that became, together, they brought it together. So these are all very, solid examples. And I once again appreciate and place on record our sincere gratitude to all of you for having come out, taken out your time from different parts, different works. And I know that it is not too easy to come all of you together, but you made it. And I think whatever you have spoken will definitely, it will be helpful to the country at large as a process of national building. So that if every family emulates from this example, a message is something which is great, which is being given to the nation. So our sincere appreciation, and I also thank Vimal sir. So he is the source of great. He had all confidence in us, so that is why he has given us this responsibility. So I place on record our sincere appreciation and thanks to Vimal sir and Mr. Sujit, who is working around the clock. He's 365 means 365, 24/7, 365. So thank you so much, and we wish you all further all the very best, all good luck, all blessings, because you are examples. You are definitely further. You have got a long way to go. Also, I'm sure that you will further raise to higher levels, and that will be something which we also look forward and we also pray for. Thank you very much. Thank you, Kishore sir. Now I request Sujit for your remarks, please. He's one of the co-coordinator along with me. Yes, your remarks. It was such a nice session, I think, very refreshing, and it's actually hearing from all the 5 sisters. Now we can proudly say that Singh is queen. So, yeah. So I just wanted to ask a very one question, that who's the captain inside the house? So all of you are players. So who is the captain inside the house when all of you are together? So who takes a call? Mother. That's a very safe answer. So I think Priyanka Didi. She's the one? We all are together. Yeah, she's the one. Yeah. I think, and also wanted to ask for all of you, who has been the inspiration for all of you? I mean, you have been inspirational for all of us, but who inspired you as a family? Our mother, I think. Mother? Yeah. That's right. Yeah. Just one quick question. I mean, someone actually asked in this thing. So there is a myth around height for playing basketball, and also about nutrition and body type. So some people actually asked in that. So if any of you want to tell us, I mean, what is this myth about, and how all of you have been very successful? I mean, Akanksha will say, I think. Yeah. Yeah. She's the She's shortest the smallest one. She's the shortest. Okay. So I'll tell you, for basketball, you need a good height to play. That's kind of a sort of standard what we hear everywhere. My height is 5'6", which is not at all very good for basketball, but there are certain elements which can be height equalizers, which I have understood in going along my basketball career, that if you have a good speed, if you have a good jump, if you're quick enough, because in basketball, agility is the main component. So if you have these 3 qualities, you can actually work as a you can equalize as a heighted player as well. At the same time, strength plays a lot of big role. So these are the things if you follow, and if you can find in a short of seats also, if they definitely can become a good basketball player. And I'm the live example. I didn't have any no, there was no replacement for me for almost almost a decade. So this is something which I understood, like height equalizer is a thing where I can actually, that's my positive, and I worked on it. I have to be quick on my feet, and I should have good jump, so I worked towards it. And it's a good question though. I think that's one of the and I want to say one thing. In basketball, is like with the physical ability, it's like more of strength, like mental strength. And because it is fast game also, it's a strength, and it is a physical sport. So mental toughness plus quick decision making. Like you have to be very, very sharp
to make quick decisions and good decisions. Because this game is very, very fast. It's just you are in offense, you are in defense, it's not an individual sport, it's a team sport. You have to make a call very quickly. So one has to be really sharp. It's not just physical, it's mental also. Right. I think the reason I actually propped this up because there are a lot of talented girls in this country and they want to play basketball, and this is one of the excuses that actually people give, that height nahi hai, to kar sakta hai, nahi kar sakta hai, physical strength nahi hai. But I think so you actually beautifully said that if you have the parent support, societal support, and also have the right mental frame of mind and all the physical strength and agility that you talked about and quick decision making, you can become a good player. I think that's very inspirational for all of you. I think your story has been very inspirational for all of us. I mean, so I asked my kids also to watch your show. So they were sitting on this side and now they just left. But I think it's very inspiring for all of us. Thank you so much. Thank you, Sujit. Thank you so much. To end with, at the outset, I'd like to salute and bow to your parents. Because I think if every parents were like this, don't you think you are lucky and blessed? But I won't say, I think most, हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ, like in South India, we are in Kerala, it's very different. But in the North, I understand. So I think you proved, बोलते हैं ना बेटी हुई. But I think now it's beti. Parents would love to have betis, and you have proved that. That's sweet. Thank you. That's what a thing for the women folk. You have shown that, proved it, and now I think every mother should say, I'd like to have a daughter too. So thank you so much for this wonderful, inspirational session. And now there are sessions. I think you are ambassadors, role models. A thing has come in the QA that this recording should be given every school. I think every parent, because your parents did something for you, but you have in the end made your parents proud. So that's the biggest thing too. So I think that's a learning and it's a lesson. And I'm sure now every parent would want. So you are role models, and there are many sitting here. They're saying, "Meri beti ko andar aana hai." You're not allowing us to enter to view the session. I can find that in the chat box. So I think now itself you have sown the seed. So thank you for sowing the seed with all of you with nice fertilizers on, with the support of the government. We have Vimal sir, Kishore sir, everybody around. Now I'm sure in another 1 month, 1 year's time, you'll find wo bhi khilna shuru karega. In 2 years, we can find the full-fledged tree. So thank you so much for this inspirational talk. And I'd like to thank each one of you, Padma Shri Prashanti Singh. I'm so happy because you 5 made it. You 5 came in together and you have showed that even you have a brother, I agree, but the entire family has really made it. So thank you so much, Padma Shri Prashanti Singh, for your valuable and gracious presence. And I say it's a Bollywood. I say Bollywood is nothing because you are real heroines of today. And you are glamour. I just told her it's going to be glamour. And I think sports person are no less than me. So that's what it is. Thank you so much. Thank you, Priyanka Singh. Thank you, Divya Singh, Pratima Singh, Akanshan Singh. Now, many would start putting our names also. They'll think, I think that the Singhs have made it great. Thank you so much for this wonderful presentation and your session. And I'd like to thank Vimal sir for his valuable presence, who sat throughout to hear because he's very instrumental and he trusted us. So thank you so much for being a part of this session. I'd like to thank Kishore sir, who's been very instrumental because, as you said, right, even being a female, anything you put across, he said, yes, go ahead. So that free hand I get, and I think we are very lucky to have in this setup in Trivandrum. We find for women, we have a free hand, and then that's helping us to step the ladder up. Thank you so much, Kishore sir. I'd like to thank Sujit because he's been working day and night, so making this program a grand success. Thank you so much. I'd like to thank Sanjay Prajapati because it's he who brought you here. So it's very important for me to acknowledge that. And he could bring all the 5 together. So thank you so much, Sanjay, for bringing in. I'd like to thank all the delegates and my dear participants. You've been sitting here since 11:15. So 2 hours with us. Thank you so much. And I'm sure there's a lot to learn. And we look forward to you again for support. So in the end, once again, thank you so much to each one of you and namaste. Thank you. Thank you. So, Dr. Usha, the takeaway is that jo kheloge wo khiloge. Sir? Yes, sir. The takeaway is that jo kheloge wo khiloge. Because ma'am ne directly bataya. So that's what you're going to bring out. That's a slogan.
And I'm sure this recording is going, and I will see that this recording is translated in other languages and it goes across the globe, because we have almost 14 countries international speakers. We'll So send it to all the schools, recording ma'am. will reach across everywhere, and we put it all in English. So it's going to reach out. So my girls, you made us proud. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.